Hello everyone. So with CET coming in on like literally 2 महीने में CET है, there are exactly 60 days left for CET. People are getting worried and obviously people have started taking mocks. Even crack students have started taking mocks. But I'll tell you one difference. There are a lot of crack students जिन्होंने already 100 plus score करना चालू कर दिया है. 112, 122 ऐसे भी काफी students हैं. But you know what happens? It's not that उनका knowledge तुमसे बहुत 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 ज्यादा है. नहीं, that is not the case. What I'm going to tell you today is how do you start scoring 100 plus marks very easily. Sure, let's start. Yes, guys. Before everything else, I just want to remind you and announce that we are coming to Pune on this Saturday. That is 21st of Jan 2023. 11 बजे we are having a seminar जिसमें ये सारी चीजें कवर करने वाला हूँ. The entire study plan, how should you study, the attitude towards how do you समझो अगर गैप है प्रोफाइल में उसको कैसे कवर अप करना है, ओवरऑल द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, हाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सीईटी, ये सारी चीजें मैं वहां करने वाला हूँ. On top of that, everybody who comes to the seminar obviously gets a discount because that is something that even happened in Nashik. Full course पे discount था. There are also a few other announcements that I want to make there. So it will be very very helpful to you guys and I'll be very happy if you join us. So Pune, we are in. Chalo, let's start. So as I told you, what we were to cover is that 100 marks कैसे लाने हैं. Guys, first now I want you to understand the one ABC strategy that I always tell you about. That is, अभी करो, बाद में करो, छोड़ दो. हर क्वेश्चन को ये तुम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. ये बहुत ज्यादा मोटा हो गया. एवरी क्वेश्चन कैन बी डिवाइडेड इन दीज 3 कैटेगरीज. अभी करो, बाद में करो एंड छोड़ दो. नाउ द पॉइंट इज दैट सीईटी प्रीडोमिनेटली इज नॉट अ टफ एग्जाम, बट द थिंग इज दैट इट्स इजी फॉर एवरीवन. यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा काम आता है. CAT on the other hand is one that tests your knowledge. CET tests your strategy. तो यहाँ पे तुम्हें ये समझना जरूरी है that 120 questions are from the A category. B category से 50 questions and C category से 30 questions. A category are the questions जो तुम देख के immediately solve कर सकते हो. B category are the questions जो तुम solve कर सकते हो but उनको time लगता है. And C category questions are the questions जो solve करने लायक ही नहीं है. क्यों? For example, इसमें समझो एक पैराजम्बल आता है. एक पैराजम्बल बस एक ही मार्क का है बट उसके लिए तुम्हें पूरा पैराजम्बल सॉल्व करना पड़ेगा. पैराजम्बल्स आर वर्थ सॉल्विंग ओनली इफ देयर आर 4 to 5 क्वेश्चंस अटैच्ड टू इट. अदरवाइज वो वेस्ट हो जाता है तुम्हारा इतना सारा टाइम. तो ये तुम 2-3 मिनट एक पैराजम्बल में डालोगे, उससे अच्छा वही 2-3 मिनट में एक कैटेगरी के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो. नाउ सीईटी एज आई ऑलवेज से इज अ गेम ऑफ एमपीएम मैनेजमेंट, मार्क्स पर मिनट. जितने कम टाइम में तुम जितने ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, दैट इज व्हाट सीईटी रिक्वायर्स. So now how do we divide these 120 questions and these 50 questions? Let's start doing it. Let's look at the English section. मैं English section को हमेशा 3 टुकड़ों में बांटता हूँ. One is RC, one is grammar, and one is parajumbles and vocab. PJ plus vocab, which are divided in 20, 20 and 10 questions. इस हिसाब से डिवीजन होता है. RC I understand सब कुछ नहीं हो सकता, but RC के एटलीस्ट तुम 15 क्वेश्चंस तो कर सकते हो. If you're following the right strategy, then getting 15 marks in RC is not a tough thing. Grammar, on the other hand, again, you can solve it grammar in a lesser amount of time than you can solve anything else in the paper. And finally आ गया तुम्हारा पैराजम्बल्स एंड वोकैब. आई एम सेइंग इसमें 50% एक्यूरेसी रखो, बस उतना ही जरूरी है, उससे ज्यादा लाने की जरूरत भी नहीं है. तो ये तुम्हारा हो गया. इसमें तुम्हें कितने मार्क्स आ गए? 15, 15, 30, 35. 35 from your VA. Now let's jump on to the quant section. Now quant section को कैसे तुम कवर करोगे? Quant section you can divide it in 3 categories again, and that is quants calculative, quants technical, and DI. Now DI आता है तब DI normally 3 या 4 सेट आते हैं, which comes up to 20 questions, and बाकी दोनों को 15-15 में बांट दो. Calculative are the questions which can purely be solved only with your speed maths, arithmetic, तुम्हारा ज्योमेट्री इसमें आ जाता है. ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी तुम्हारे परसेंटेज एवरेज, जो भी अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस, SICI, ये सब कुछ कैलकुलेटिव में आ जाता है. You can have a high accuracy here and get 10 marks out of this. DI में again get 10 marks. And technical में मैं बोलता हूँ 5 ही मार्क लेके आओ. It's okay if you get less marks. टेक्निकल मतलब तुम्हारा PNC हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और तेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया. ये सब कुछ जो टॉपिक जो तुम्हें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है,
ये सारे टॉपिक्स यहाँ आ गए, नंबर सीरीज भी यहाँ पे आ गया टेक्निकल में. सो दैट इज समथिंग दैट इज टफ, जिसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा. तो दैट इज यू स्कोर 25 मार्क्स इन योर क्यूए. देन वी गो ऑन टू एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट का बस एक ही होता है, तो देयर आर नो टाइप्स इन एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट में मैं बोलता हूँ 25 में से यू हैव टू गेट ओनली 10 मार्क्स. चलो, इफ यू आर पुशिंग फॉर इट तो 15 मार्क्स यहाँ से लेके आओ. ओके, एब्स्ट्रैक्ट में 15 मार्क्स. एंड फाइनली व्हाट यू डू इज एलआर. एलआर को भी 3 टुकड़ों में बांट दो. आई नॉर्मली डिवाइड इन 4 पीसेस फॉर माई स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे तुम 3 टुकड़ों में बांट सकते हो उसे. एंड दैट इज एलआर, puzzles, critical reasoning, and LR standalone. पजल्स मतलब तुम्हें पता है, पजल्स आते हैं अप्रोक्सीमेटली 35 मार्क्स के. क्रिटिकल रीजनिंग आ जाता है 20 मार्क्स का. एंड स्टैंड अलोन आ जाता है 20 मार्क्स का. एंड दैट कवर्स योर 75 मार्क्स. पजल्स में से मैं बोलता हूँ, देखो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस 3 राइट पजल सॉल्व करनी है. ओनली 3 पजल्स राइट. 6 या 7 पजल्स होती है. 3 पजल्स राइट सॉल्व कर लो एंड दैट विल गिव यू 15 मार्क्स. क्रिटिकल रीजनिंग आधा ही सही सॉल्व करो, दैट इज 10. इट्स ओके, इट्स ओके इफ यू डू इट. एंड इफ एट ऑल अगर समझो तुम्हें ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर चाहिए, देन अ क्रिटिकल रीजनिंग नॉर्मली कम्स फॉर 15 मार्क्स एंड स्टैंड फॉर 25, बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग पे थोड़ा थोड़ा उस पर धीरे धीरे इंपॉर्टेंस कम हो रहा है सीटी में ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. तो ये 10 में से मैं बोलता हूँ 7 मार्क्स, 15 में से 7, आधे से थोड़ा कम. एंड 25 स्टैंड में आ गया तुम्हारा फैमिली ट्री, सिलोजिज्म, बाकी जो भी इनपुट आउटपुट, एंड जो भी ऐसे सिंगल सिंगल स्टैंड अलोन क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इनपुट आउटपुट, वो सारे स्टैंड अलोन में आ गए. इसमें से मैं बोलता हूँ 15 मार्क्स लेके आते हैं. नाउ 15 15 37, दैट इज ए लास्ट सेक्शन. नाउ गाइस समझो, इफ यू आर जस्ट स्कोरिंग दिस मच, एंड वीए में चलो इवन इफ यू स्कोर 30 मार्क्स, then how much does the total come up to? 30 25 40 70 107. Now this I'm telling you from the bare minimum marks that you can get. How do you think that students end up scoring 140 145? वो लोग पहले ये 107 मार्क्स को पक्का करते हैं. If your this is clear, your confidence will be at an all time high. And उसके ऊपर तुम जो भी राइट करते जाओगे that will be bonus. Now 107 मार्क्स मतलब you are already at a 99 percentile in CET. समझ रहे हो? सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट टेक केयर अबाउट, दैट सीईटी में तुम्हें 100% मार्क्स नहीं लाने. यू हैव टू ब्रेक डाउन ईच एंड एवरी सेक्शन टू गेट minimum marks out of that, and these are the minimum marks that you can get out of each and every section. So if you see ideally how a person who scores 145 or 140 scores it, वो इंग्लिश में 30 मार्क्स लाता है, 30 से 35. क्वांट्स में अगेन 30 मार्क्स का एक्सपेक्टेशन होता है, एब्स्ट्रैक्ट में 18 एंड एलआर में होता है 55 मार्क्स. नाउ इफ यू कैलकुलेट 65 प्लस 55 120 120 138, ये आ गया तुम्हारा 140 मार्क्स के आजू बाजू. ओके, 138 इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर. दिस इज हाउ दे ब्रेक इट डाउन. इट इज अबाउट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मोर देन सॉल्विंग एनीथिंग एल्स. Now obviously ये मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बताया, but I'll talk about this in much more detail in my Pune seminar. So I would love for you guys to join. And on top of that, obviously there are a lot of options that if you want to join crack elitist course. Sure. So I hope you guys understood this. I hope this was very very clear to all of you. And on top of that, I really hope that you guys are studying and तुमने mocks देना चालू कर दिया है. अगर नहीं किया, then start it now. Okay. Bye everyone.